Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अभी हमने जो बेसिक चीज़ें हैं वो डिस्कस किए. स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेट स्ट्रिंग, स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव इन क्लोज एंड ओपन आर्गन पाइप. अब हम इससे रिलेटेड कुछ MCQs डिस्कस करते हैं. So start 64 number से लेते हैं. In a standing wave, the wavelength produced in the string is half of the length of the string when the number of the loop. यानी क्वेश्चन में ये गिवन है कि the wavelength produced in the string is half of the length, right? Lambda is equal to L by 2, right? So we know that lambda n is equal to 2L by n, right? 2L by n. So it means that here n is the number of loop, right? So n is equal to 2L by lambda n. Our lambda n हमें condition क्या given है कि the wavelength produced is half of the length of the string. So it means that lambda is equal to L by 2, right? तो इसको अगर हम rearrange करें तो it is 4. So here the number of loop is 4. इसको आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि ये पिछले स्लाइड पे भी हमने डिस्कस किया कि the string is always vibrate in a whole segment. String is always vibrate in a whole segment and the length of one segment is lambda by 2. तो अब अगर देखें हमारे पास ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, अगर ये एक लूप में वाइब्रेट करेगा तो हमारे पास एक लेमडा हाफ होगा. अगर ये दो लूप में वाइब्रेट करेगा तो L इज इक्वल टू 2 लेमडा 2 बाई 2 यानी 2 लेमडा हाफ. इसी तरह लेंथ इज इक्वल टू 3 लेमडा 3 बाई 2 एंड सो ऑन. सो L इज इक्वल टू n लेमडा n बाई 2. तो इसको हम लिख सकते हैं कि लेमडा n इज इक्वल टू 2L बाई n और n इज इक्वल टू. तो द स्ट्रिंग इज ऑलवेज वाइब्रेट इन अ होल सेगमेंट एंड द लेंथ ऑफ वन सेगमेंट वन लूप इज इक्वल टू लेमडा बाई 2. अगर दो लूप हो तो फिर हमारे पास 2 लेमडा बाई 2 3. तो इसमें कंडीशन क्या गिवन है कि वेवलेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ. इट मीन दैट देयर आर 4 loop. The correct expression for the fundamental frequency of the closed organ pipe. Closed organ pipe के लिए देखें fundamental frequency किस चीज के बराबर है? V by 4L, where L is the length of the pipe. और अगर हम open organ pipe के लिए देखें for open organ pipe it is V by 2L. So question में हमसे क्या पूछा गया है कि the correct expression for the fundamental frequency of the closed organ pipe. So for the closed organ pipe it is V by 4L, right? The frequency of the stationary wave in the open organ pipe for the second overtone, right, when both end are open. इसका मतलब है कि क्या है कि open organ pipe है, right? So for open organ pipe if not is equal to V by 2L. अब क्वेश्चन में हमसे सेकंड ओवरटोन के बारे में पूछेंगे. सेकंड, तो सेकंड ओवरटोन का मतलब क्या है? इट इज बेसिकली थर्ड हार्मोनिक, राइट? थर्ड हार्मोनिक्स. तो इसका मतलब है कि F हमसे क्या, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक इज इक्वल टू 3F0, 3 and 2 V by 2L. So the correct expression is 3V by 2L, right? In a closed pipe, in a closed organ pipe of length L, the wavelength of the fundamental tone is equal to the wavelength of the
fundamental tone is equal to. So for the closed organ pipe, we know that fundamental wavelength is equal to V by 4L. तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछेंगे कि the wavelength of the fundamental node, right? The wavelength of इसका मतलब है कि L lambda is equal to 4L, because we know that F naught is equal to V by lambda, and for the closed organ pipe we know that F naught is equal to V by 4L. So the wavelength of the fundamental node is equal to 4L, right? If the speed of the sound is 340 meters per second, the length of the shortest closed pipe that resonate at a frequency of 1, the length of the shortest closed pipe that resonate at a frequency. तो इसमें हमसे question number 68. We know that for the closed organ pipe, F is equal to 4L. So L is equal to V by 4F, right? So V हमारे पास 340 है, F into 4, F और F है 170, तो 170 इसके साथ कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, तो it is 1/2 meters. So L is equal to 0.5 meter, right? So the correct expression is this one. Which of the following statement is true regarding the closed organ pipe? All harmonics are present, only even harmonics are present, only odd harmonics are present. So in case of the closed organ pipe, only odd harmonics are present, right? Which of the following organ pipe is richer in harmonics? So richer in harmonic matlab there are more harmonics in open organ pipe. Open organ pipe में ये भी होते हैं, even भी होते हैं और odd भी होते हैं, right? So the correct expression here is open organ pipe. Open organ pipe is richer in harmonics, right? Because इसमें even और odd दोनों किस्म के harmonics होते हैं, right? अब हम जरा स्लाइड चेंज कर लेते हैं. Question number 71. The correct expression for the fundamental frequency of the open organ pipe. So we know that for the open organ pipe, the fundamental frequency is equal to Vf is equal to V by 2L. This is the fundamental frequency of the open organ pipe. In open organ pipe of length L, the wavelength of the fundamental node is equal to. In open organ pipe of length L, the wavelength of the, so we know that F naught is equal to V by 2L. It means that L lambda is equal to 2L, क्योंकि फंडामेंटल मोड वो मोड होता है जिसमें पूरा एक ही लूप जनरेट होता है, राइट? तो L is equal to lambda by 2 or lambda is equal to 2L. Which of the following statement is true regarding the open organ pipes? All harmonics are present, only even harmonics are present, only odd harmonics are present, none of them. So all harmonics are present, right? In case of open organ pipe, all harmonics are present, where in case of closed organ pipe, only odd harmonics are present. So open organ pipe में
all तमाम हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं. The frequency of the fundamental mode of open organ pipe is 600. Question number 74. F is equal to 600 hertz, right? If one end of the pipe is closed, then the fundamental frequency, यानी आप लोग अगर देखें, if closed is equal to V by 4L, इसको हम लिख सकते हैं कि 1/2 into V by 2L. So 1/2 into if open. So इसका मतलब है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाफ है. ये तो जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैंने कर दिया. 600 by 2. So it is 300 hertz. तो द करेक्ट एक्सप्रेशन इज 300 हर्ट्ज. लेकिन ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि पाइप इनिशियली ओपन है. अब इसके एक एंड को हम क्लोज करते हैं, तो जब हम क्लोज करते हैं इसका मतलब कि जो क्लोज्ड आर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इट इज हाफ ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन आर्गन पाइप. तो अगर ओपन आर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी जो है वो 600 है, तो क्लोज्ड आर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 300 hertz. An organ pipe that is open at one end resonate at fifth harmonic with the wavelength. The other end, यानी अब इसमें हमें ये नहीं क्या कि पाइप ओपन है या क्लोज है. हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ये जो पाइप है ये क्लोज्ड है या ओपन है. तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है resonate at the fifth harmonic with the wavelength 75, right? 75. It means that lambda 5 is equal to 2L by 5, क्योंकि ये हमें कंडीशन गिवन है. It means that if 5 is equal to V by lambda 5, और हमारे पास ये V 2L lambda 5 की जगह हम इसकी जो वैल्यू है ये पुट करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5 into V by 2L. तो इसको 5 into F naught. So the fundamental frequency is equal to V by 2L. It means that the other end is open. The pipe is open organ pipe, right? A flute is 0.4 meter long. The maximum wavelength it can produce. Maximum wavelength वो होती है जब पूरे यानी the frequency, the wavelength corresponding to the fundamental mode is basically the maximum wavelength. Our flute क्या है? It is basically in open organ pipe, right? 76. So length हमें given है the maximum wavelength it can produce, right? The maximum wavelength of flute का we know that F is equal to V by 2L is equal to V by lambda. It means that lambda is equal to 2L. तो length तो हमें given है, right? It is length हमें given है, वो कितनी है? Length is 0.4. लेमडा हमारे पास 2L के बराबर है एंड लेंथ है 0.4. so it means that lambda the maximum wavelength is 0.8 meter, right? This is basically 0.4. so the correct answer is 0.8. For the open organ pipe of length 0.6 meter, which wavelength is not possible? लेंथ हमारे पास कितनी है? क्वेश्चन नंबर 77. फॉर ओपन आर्गन पाइप विच वेवलेंथ, यानी मैक्सिमम वेवलेंथ तो हमारे पास लिम्डा इज इक्वल टू 2L, मैक्सिमम 2 and 2.6, तो इट इज 1.2 मीटर. ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, तो इट मीन दैट दिस इज नॉट पॉसिबल. सो द करेक्ट आंसर इज
विच वेवलेंथ इज नॉट पॉसिबल 1.6, क्योंकि हमारे पास ये भी आ सकता है कि लेमडा इज इक्वल टू 2l, राइट, लेमडा इज इक्वल टू l या 2l/3, तो ये सारे ऑप्शन पॉसिबल है, राइट। लेकिन इससे मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो 2l है, 2l से ज्यादा वेवलेंथ पॉसिबल नहीं है। The fundamental frequency of the closed organ pipe of the same length or related is, यानी the relation between the frequency of the closed and open organ pipe, right? इसमें हमसे closed और open organ pipe के frequency के बारे में पूछा गया है, तो इसको देखे, length of the pipe is same, length of the pipe is same, so if open is equal to v by 2l, और जो if closed है वो v by 4l है। इसका मतलब है कि this is the closed, if open by 2, right, if open by 2, so the correct expression is if close is equal to f open by 2, f close is equal to f open 2f. So this is the correct expression is f closed is equal to f open by 2 या f open is equal to 2 close. So the correct expression is this one. अब थोड़ा सा स्लाइड चेंज करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है क्वेश्चन नंबर 79, right? So the string of length L can maintain the stationary wave of wavelength lambda given by, तो ये एक क्वेश्चन तो इससे पहले भी हम कर चुके हैं। आई थिंक स्टार्ट में जो 64 नंबर क्वेश्चन था वो बिल्कुल इसी तरह था। L is basically n into lambda n by 2. Lambda n by 2. So it means that lambda n is equal to 2l by n. इस एक्सप्रेशन से हम नंबर ऑफ लूप भी निकाल सकते हैं। तो द करेक्ट एक्सप्रेशन इज दिस वन। A stretch string of length 3 meter and has a 6 loop. Length is 3 meter and loop are 6. Of stationary wave has a wavelength, right? Length is how much? यानी अब हमारे पास कितने लूप है? हमारे पास लूप जो है वो 3 मीटर लेंथ है एंड इट हैज अ 6 लूप, तो एंड हैज अ वेवलेंथ, सो लेमडा एन बिल्कुल इसी तरह है, इज इक्वल टू 2l बाई n। बिल्कुल यही रिलेशन हमने यूज करना है जो इससे पहले हमारे पास लेंथ कितनी है 2 and 2, लेंथ 3 मीटर, राइट, and loop has a 6 loop, so it is 1 meter, right? So यही एक्सप्रेशन हमने यूज करना है कि lambda n is equal to 2l by n। अब हमें लेंथ भी गिवन है, नंबर ऑफ लूप भी गिवन है, so the wavelength is 1 meter. Which of the following frequencies of higher harmonic of string with the fundamental frequency? Which of the following frequency are of the higher frequency? यानी हमारे पास अगर fundamental frequency 150 hertz है, so the frequency of higher order mode, यानी if not is equal to 150, तो we know that f2 is equal to 2f naught, ये 300 हो गया। इसी तरह 3f naught ये 450 हो गया। तो क्वेश्चन में क्या है
कि which of the following frequency are of the higher order, तो इसमें सिर्फ ये जो है ये 150 का मल्टीपल है, so this is the frequency of the higher order. A pipe open at both end resonate at a fundamental frequency if open, right? When one end is covered and the pipe is again made to resonate the fundamental frequency if closed. So इसमें फिर हमसे if closed और इसके दरमियान relation का पूछा गया है. So we know that if closed is equal to 1 over 2 if open, right? So if closed is equal to 1 over 2 if open. So this is the correct expression. ये क्वेश्चन जो है ये बीट से रिलेटेड है, तो फॉर द टाइम भी हम इसको स्किप करते हैं. An open organ pipe open at both end has a length. तो if the velocity इसको इस तरह करते हैं कि स्लाइड को चेंज करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं. तो इसमें हमें जो है लेंथ ऑफ गिवन है, लेंथ इज बेसिकली 80.8 मीटर एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी जो है वो 340 मीटर पर सेकेंड. सो हमसे the frequency of the second harmonic, right? So it is open pipe, so F2 is equal to 2 F naught 2 and 2 V by 2L, right? So 2 V by L, so 340 divided by 0.8, it is about 425 hertz, right? So the correct expression is this one. A sound wave traveling in the air has a frequency F and wavelength lambda. A second sound wave traveling in the air has a wavelength. What is the frequency, right? तो देखे अगर मीडिया हमारे पास सेम है तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड रिमेन कांस्टेंट, यानी v इज इक्वल टू f इनटू लैम्डा. अब इनिशियली क्या है, फ्रीक्वेंसी f है और वेवलेंथ लैम्डा है. तो v स्पीड ऑफ द साउंड इज कांस्टेंट इन अ गिवन मीडियम. तो अगर हम वेवलेंथ को हाफ करें तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी. सो द फ्रीक्वेंसी विल बी 2f. A closed end pipe of 4 feet long resonate to a given tuning fork. Then the wavelength is of the fundamental. Then the wavelength of the fundamental mode is, right? The wavelength of the fundamental mode. So for the closed organ pipe, we know that if naught is equal to V by 2L is equal to V by lambda. Sorry, it is 4L. For the closed organ pipe, it is 4L. So lambda is equal to 4L. Our L given है 4 into 4 feet, so it is 16 feet, right? So the correct expression is 16 feet. अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और ओपन पाइप हो तो फॉर ओपन पाइप इट इज लैम्डा इज इक्वल टू 2L. सो फिर 8 फुट होगा, लेकिन चूंकि पाइप क्या है, क्लोज एंड पाइप है, सो द करेक्ट आंसर इज 16 feet. So I think this is sufficient for today.